Greetings, students. Hi, this is Shattugu Chakraborty from Indraprastha Law College, Greater Noida, and today's subject is human rights, and the topic that we're going to discuss is Human Rights United Nations Tutorial Video 1, which is meant for BLLB 4th Sem students. Students, this video has been divided into two parts, and today we're going to discuss the first part itself of human rights in United Nations. So, let us take a peek at the United Nations and human rights. The United Nations Charter sets forth the inherent dignity and the equal and inalienable rights of all members of the human family. So, ह्यूमन राइट्स की जो चार्टर है वो क्या प्रमोट करता है? इनहेरेंट डिग्निटी एंड इक्वल एंड इनएलियनेबल राइट, कि हर व्यक्ति की जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ्स के बारे में बात करते हैं, रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन लाइफ्स को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि इनहेरेंट डिग्निटी क्या है? विद बर्थ वी आर एंटाइटल्ड टू एन्जॉय ह्यूमन राइट. सो ये इनहेरेंट है, बाय बर्थ ये राइट्स हम लोगों को मिलता है, ये राइट सौंपा नहीं जाता है. तो ये जो रिस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ये इनहेरेंट है. आपकी जन्म से आप जब बॉर्न होंगे, एनीबडी, एनी बेबी, एनी person who is born, he inherits those right automatically, and thus with those inherited right he inherits the dignity or the respect at the same point of time. और हर एक व्यक्ति को इक्वल एंड इनएलियनेबल राइट भी मिलना चाहिए. कोई डिस्पैरिटी नहीं रहेगा, हर व्यक्ति को समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा. तो ये ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेगा. So, upholding this human right principle as the foundation of freedom, justice and peace in the world is the fundamental to ever undertake of the United Nations. So, United Nations का main motive क्या रहा है? Talking about inherent dignity and equal and inalienable right, कि ये अगर आप promote, execute करते हो, implement करते हो, तो foundation क्या बनेगा? International peace, freedom, liberty, justice, implement होगा. So this has been the main motive, the main modus operandi of United Nations. The UN General Assembly. The United Nations currently comprises of 185 member states, all of which belong to General Assembly, the main body of United Nations. Amongst the other bodies, the General Assembly controls the UN's finances, making non-binding recommendation and oversees and elects members of the UN organs. General Assembly ultimately votes to adopt human rights declarations and conventions, which are also called treaties or covenants. For example, in 1948, when UN Commission of Human Rights had completed its draft of the Universal Declaration of Human Rights, the General Assembly voted to adopt the document. तो General Assembly एक बहुत important body है UN का, which comprises of how many? 185 members. Please note, the General Assembly controls the UN's finances. जो UN की finances है वो General Assembly control करता है, और overseas जो bodies है उनके ऊपर भी ये administration करते हैं, administer करते हैं, and at the end of the day they also elect member for the UN organs. So it is one of the most important and significant bodies of UN. Secondly, it is the General Assembly that ultimately votes to adopt Human Rights Declaration and Convention. So General Assembly ultimately votes to adopt the declaration and conventions. जो भी treaties है, covenants है, declaration है, ये General Assembly decide करते हैं. For example, 1948 पे जब UN Commission on Human Rights जो draft किया गया था, तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना इन द लेटर फॉर्म, वो जनरल असेंबली वोट करके अडॉप्ट किए थे. सो let us look at the other UN bodies. In addition to the General Assembly, in which all member states are represented, there are 5 or other main bodies of United Nations that deal with different types of international concern. So keeping aside General Assembly, which is one of the most imperative body in UN, there are other bodies too that are 5 in number of under the domains of United Nations that deals with different types of international concerns and administration tasks. So please note at the diagram given out here, International Court of World Justice, General Assembly, and there are other bodies like Secretariat, Economic and Social Council, Security Council, Trusteeship Council. और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंडर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं. आप लोग इससे काफ़ी यू गाइज आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट. जैसे देखोगे आप, डायग्राम में दिया गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर ILO आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ,
United Nations Development Fund for Women, UNIFEM, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization UNESCO और World Health Organization WHO भी Economic and Social Council के अंडर आता है. तो General Assembly is the main body and which has other, 5 bodies which are connected to which takes other decisions and goes out for the administrative task, and also looks into the matter of international concern. So those 5 bodies are International Court of World Justice, Secretariat, Economic and Social Council, Security Council and Trusteeship Council. And there are other sub bodies which comes under the purview or the administration of Economic and Social Council. Although human rights are fundamental to all functions and UN, human rights issues mainly fall under Economic and Social Council. This council of 54 members elected by General Assembly is responsible for coordinating all economic and social work of the UN and its affiliated institution. So obviously the other concerns जो है वो बहुत important काम करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की काम करते हैं, इंटरनेशनल कंसर्न को देखते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इकोसॉक, क्योंकि इकोसॉक के अंडर बहुत सारे सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हु, ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनिफेम. सो इकोसॉक के 54 मेंबर्स हैं जो जनरल असेंबली इलेक्ट करते हैं एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग जो भी इकोनॉमिक और सोशल वर्क होगा UN के अंडर, वो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन के अंडर ही होगा. जैसे आप अगर देखोगे ये कोविड का जो सिचुएशन है, हु इज़ द वन हु इज़ मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग इट वर्ल्ड वाइड, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोसॉक के अंडर ही आता है. तो इनका मेन काम है इकोनॉमी सोशल वर्क को प्रमोट करना and take care of the whole system, promoting human rights. The economic and social work oversees the work of many intergovernmental organizations, IGOs, and certain UN commissions such as UN Commission of Human Rights too. So, this is the first part of United Nations and human rights. This is the basic of United Nations and human right itself, कि UN के अंडर क्या बॉडीज़ है जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस है, फंक्शन कैसे करते हैं, एंड we just spoke about the structure. In the next video, we'll be also talking about the details of how UN functions and what are the, methods that they tend to adopt to promote human rights. So this will be all for today class. Thank you.